Good morning, students. The problem that we were solving here that was about the design of a pre-stressed concrete deck slab bridge for IRC class A loading. And if you remember the steps, we had determined dead load bending moment and live load bending moment subjected to the different load combinations and load factor, the maximum moment at Thoratha that we had considered. First, we were verifying the sectional modulus required. We are knowing the equation that the ZB required and ZT required must be greater than 1 minus eta ms plus mi divided by FTR and FBR. तो हमने FTR कैलकुलेट किया, FBR कैलकुलेट किया on the basis of the permissible values of stresses. We have seen various guidelines also for that. After that, it was verified that whatever sectional modulus provided, it is greater than the sectional modulus required. So it was safe in the limited state of serviceability internal stresses. जो हम पहले बोलते थे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, maximum compression and cracking. The sectional modulus provided is more than the sectional modulus required. What we need to do next is determine the magnitude of pre-stressing force. How will you determine the magnitude of pre-stressing force? What we are doing here is all these values are per meter width. अगर 1 मीटर width अगर मैं consider करता हूँ, then these are the moments which are acting, the shear force which is acting. Right, the sectional modulus required, and we have verified that whatever sectional modulus provided, it is more than the sectional modulus required. That was the first check. What is next now? It is found that it is safe in limited state of serviceability. Sectional modulus ठीक है, section suitable है, it is satisfying the requirement. Next, determine the magnitude of pre-stressing force. Here is the equation. As it is a rectangular section, the ZB and ZT is same. Is it right? We are solving for 1 meter wide slab. As the ZB and ZT is same, that is taken common and cancel, and finally we reach to this equation as the pre-stressing force required per meter width. All these are per meter width of slab. This is for every meter width of slab. F inferior का ये इक्वेशन है, F superior का ये इक्वेशन है. ZT and ZB are nothing but the sectional modulus which are provided. As it is rectangle, so the ZB and ZT is same, that can be taken common. Finally, these were the equations for the F inferior and F superior. As it is a type 1 element, we have considered either it must be given in the question, otherwise we have to assume. Otherwise, permissible values of stresses कैसे रहना चाहिए in tension at transfer, in tension at working, ये आपको पता है. वर्किंग में तो 0 रहना चाहिए बताता है कोड, और ट्रांसफर के लिए 1/10th of the permissible values of stresses in concrete, in compression and transfer. वो सब हमने clauses discuss किया है पिछले लेक्चर में. So now substitute everything here in the equation and please tell me the answer for F superior and F inferior, so that I will put here and I will get the value of the pre-stressing force which is required. Ms, the moment because of this self-weight, get these values. Ms by ZB. ZB and ZT is same. So it is 225.28 into 10 raised to power 6 divided by the sectional modulus is 33.75 into 10 raised to power 6. चलिए मुझे कैलकुलेशन करके वैल्यूज देते जाइए. Mi divided by ZB, that will be equal to 147.83 into 10 raised to power 6 divided by 333.75 into 10 raised to power 6. See, this is one of the drawback with the bridges is its self-weight. Right, you can see here the bending moment because of the self-weight is more than the bending moment because of the imposed load.
और मुझे पता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर सच केसेस। क्या होता है ऐसे केस में, जब हम प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जब हम एक्सेंट्रिसिटी डिटरमाइन करते हैं, तो नॉर्मली वो एक्सेंट्रिसिटी सेक्शन के बाहर जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, then we have to restrict the eccentricity. When you restrict the eccentricity, then we have to recalculate the magnitude of pre-stressing force. That way we have to go. So the moment because of self it is available, the moment because of imposed load is available, get the values of ZB, MS upon ZB and MI upon ZB. Please calculation मुझे करते रहिए और पैरेलल में ये बताते रहिए। MS upon ZB and MS upon ZT is same. This is equal to MS upon ZT also. Because this is rectangular section, ZB and ZT is same. So please tell me the answers. It will be equal to 1 divided by 0.8 because the loss factor is considered as 0.8 at these two values. चलिए कितना आ रहा है बोलिए ये values. Please tell me the answers. साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए आप लोग, मुझे आंसर बताते रहो। हाँ okay fine, 6.67 and 4.37. Thank you Anurag. It is equal to 6.67 MPa and this is equal to 4.37 MPa. Okay, आप जो भी आंसर देंगे उसके रेफरेंस में यहाँ पर सोल्यूशन चलते रहेगा। सो इट इज 6.67 प्लस 4.37, add the two, divided by 0.8 and you will get the value of F inferior. So what is the value of F inferior? अच्छा, thank you Amir, thank you Amir, thank you Amir. It is 13.81. So it is equal to 13.81 MPa and F superior will be equal to minus 6.67 MPa. Now put the values here. How much is the area? The area will be, it is 450 was the thickness of deck slab and 1000 mm is the width. So it is 450 into 10 raised to power 3 mm square is the area. Now put here the magnitude of pre-stressing force required will be equal to 450 into 10 raised to power 3 in bracket 13.81 minus 6.67. So what is the pre-stressing force required? How much is the pre-stressing force required? Please do it. Give me the answer. चलिए आंसर दीजिए मुझे। एंड देन हाउ विल यू गेट द एक्सेंट्रिसिटी? दिस इज द ऑप्टिमम प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स and the corresponding eccentricity. The equation for eccentricity is ZB ZT in bracket F inferior plus F superior divided by A in bracket ZB F inferior plus ZT F superior. चलिए मुझे पहले ये वैल्यू दीजिए प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स का। Then here is the equation for the eccentricity.
Again, you will see that the z can be taken and common and cancel. So one of the z will get cancelled because z and z be same for this case. This z we can write as equal to bd square upon 6 divided by this a bd. So that will be d by 6 in bracket f inferior plus f superior, नॉट प्लस, यहाँ पर ये माइनस है, डिवाइडेड बाय f inferior plus f superior. Is that right? चलिए मुझे आंसर दीजिए, प्लीज गिव मी द आंसर्स. Sir, area will be divided by 2. Yes, you are absolutely correct. It is a by 2. You are absolutely right. Yes, yes, you are correct, Amir. You are right. So it is a by 2 in bracket f inferior plus f superior gets the magnitude of pre-stressing force. Here is the equation for eccentricity. ये सब equations आपको याद रहना चाहिए. Z is BD square by 6. One of the Z will get cancelled. It is BD square by 6 divided by BD. So that BD will get cancelled. So it will be only D by 6 left here. F inferior minus F superior divided by F inferior plus F superior. So the eccentricity required will be equal to 450 divided by 6 in bracket 13.81, and then minus of minus will get plus. It is 6.67 divided by 13.81 minus 6.67. So it is 1.6. Okay, fine. So I will write 1600. Is that okay? Kilonewton. Is it right? 160. 1606.5. Okay, fine. 1606.5 kilonewton. Understood. So this is the pre-stressing force required per meter width. Per meter width of slab. For 1 meter wide slab, this is the force required. And what is the eccentricity? हम कितना eccentricity रख सकते हैं? Or corresponding to this pre-stressing force, how much is the eccentricity required? Optimum pre-stressing force and corresponding eccentricity. Such that it will satisfy all the requirements. Please give me the answer for the eccentricity. And then we will see what is the eccentricity that is required here to be provided. Do we have that much of space available there? हम केबल को वहां प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ, तो व्हाट इज द eccentricity? चलिए फास्ट दीजिए आंसर, इतना स्लो नहीं चलेगा. प्लीज डू इट फास्ट. अरे कैलकुलेटर लेकर बैठिए यार, 2-4 लोग आंसर देना चाहिए कम से कम. प्लीज डू इट फास्ट, इतना स्लो नहीं चलेगा. This is the pre-stressing force required and the eccentricity will be. हाँ, कहां पर अपोजिट साइड दे दिया है? It is ZB ZT F inferior minus F superior divided by A ZB F inferior plus ZT F superior. ये करेक्ट है. D by 6 F inferior minus F superior divided by F inferior plus F superior, ये भी राइट है. F inferior का वैल्यू एंड दिस माइनस ऑफ माइनस विल गेट प्लस.
This is 13.81 minus 6.7. Everything is right. 26.147 नहीं होगा. फिर इतना तो हम एक्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे सकते थे. इतना तो हम एक्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे सकेंगे अगर 26 रहेगा. The bending moment because of the dead load is more than bending moment because of live load. तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि एक्सेंट्रिसिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगी. उतना स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा. हाँ, ये करेक्ट है. 215.126. ओके, थैंक यू अनुराग. ओके, थैंक यू, थैंक यू. So the eccentricity is equal to 215.16 mm. Okay. Now see, do we have this much of space available? मैंने क्या बोला था, कैसे ऐसे, this is how the slab is. ये डेक स्लैब है. हमने 1 मीटर वाइड स्लैब लिया है. दिस इज 1 मीटर वाइड स्लैब. यहाँ इसका न्यूट्रल एक्सिस रहेगा. इफ आई टेक दिस सेक्शन आउट, दिस इज ये ऊपर का बेरिंग कोड रहेगा. से दिस इज द बेरिंग कोड. दिस इज द डेक स्लैब 1 मीटर वाइड. से हियर इज द न्यूट्रल एक्सिस. नाउ यू जस्ट सी इट. इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड दिस मच ऑफ एक्सेंट्रिसिटी? इतना एक्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड करना पॉसिबल है क्या? What was the pre-staging force required? 1606.5 kilonewton. Okay, and eccentricity is 215.16 mm. Okay, now let us see. इतना eccentricity प्रोवाइड करना पॉसिबल है क्या? The depth of this slab is 450. तो न्यूट्रल एक्सिस का रहेगा एट हाफ द हाइट. दैट विल बी इक्वल टू 225 mm. अगर यहां पर 225 mm इज द ओनली डिस्टेंस अवेलेबल, राइट? अभी इसमें हमको क्या रखना पड़ेगा? पहले वी हैव टू कीप द स्टील. बॉटम में भी एक यहां पर नेट आएगा. देयर विल बी ए नेट ऑफ स्टील इन बॉटम पैरेलल टू द विड्थ एंड पैरेलल टू द स्पैन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ बोर्ड. बॉटम में यहां पर एक नेट आएगा. अब अगर ये नेट आएगा बॉटम में, जैसे इट इज ए स्लैब. स्लैब में क्या करते हैं? वी प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट इन द बॉटम बिकॉज दैट इज द टेंशन जोन. अभी अगर बॉटम में मुझे स्टील रखना है, राइट, से दिस इज द डेक स्लैब. मैंने पहले कौन सा स्टील रखना चाहिए? विच रेनफोर्समेंट आई हैव टू कीप फर्स्ट? वन विच इज पैरेलल टू दिस स्पैन और द अनदर विच इज पैरेलल टू दिस विड्थ. विच ऑफ द स्टील आई विल कीप फर्स्ट? बिलो. फिर दूसरा स्टील उसके ऊपर आएगा. वी हैव टू मेक ए नेट. तो पहले कौन सा स्टील रहना चाहिए? कौन सा स्टील नीचे रहना चाहिए? कौन सा स्टील नीचे रहना चाहिए? कौन सा स्टील हम पहले रखेंगे? बिकॉज वी हैव टू मेक ए नेट. स्लैब में हम रेनफोर्समेंट रखते हैं इन बोथ द डायरेक्शन. इज इट राइट? अगर ये स्लैब है तो हम क्या करते हैं? रेनफोर्समेंट वी कीप इन बोथ द डायरेक्शंस हियर. लेकिन पहले कौन सा रखेंगे? वन विच इज पैरेलल टू द विड्थ और वन विच इज पैरेलल टू द स्पैन. विच ऑफ द स्टील वी विल कीप फर्स्ट? जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है. सी दिस विल एक्ट एज ए वन वे स्लैब. मैंने बताया इट विल एक्ट एज ए वन वे स्लैब बिकॉज इट इज सपोर्टेड एट दीज टू एंड्स ओनली. तो डिफ्लेक्शन का सिर्फ यही एक डायरेक्शन है. So first we have to keep the reinforcement which is parallel to this span. That we have to keep first. तो वो मुझे यहां कैसे दिखेगा?
मुझे यहां ऐसे दिखेगा स्टील वो। मैंने यहाँ दिया, दिस इज द सेक्शन आई हैव टेकन आउट, सो द स्टील व्हिच इज पैरेलल टू द स्पैन दैट वी कैन सी जस्ट लाइक a dot here because the steel is parallel to the span, perpendicular to this plane, because it is a one way slab. So in the direction of deflection, in the direction of steel, we have to keep steel first because the moment will be acting in that direction. वो डायरेक्शन में मोमेंट एक्ट होगा, वो डायरेक्शन में टेंशन आएगा, सो दैट वी हैव टू कीप फर्स्ट। फिर इसके ऊपर यहां पर दूसरा स्टील भी रहेगा, दिस इज पैरेलल टू द विड्थ, दिस स्टील विल आल्सो बी देयर। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट ये वेरीफाई कर रहा हूं कि व्हाट इज द प्रेशर फोर्स रिक्वायर्ड 1606.5, एक्सेंट्रिसिटी कितना रिक्वायर्ड है 215.16। I just want to verify, is it possible to provide that much of eccentricity? फिर यहां पर आएंगे केबल, केबल यहां पर ऐसे चलेंगे परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, राइट, बिकॉज दोज मस्ट आल्सो बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्पैन। केबल स्पैन के डायरेक्शन में रहेंगे, सो दीज आर द केबल डक्ट, इज इट राइट, दीज आर द केबल डक्ट, राइट, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखेगा। ओके, हमने कवर कितना रखना चाहिए, व्हाट मस्ट बी द कवर टू दिस स्टील, प्लीज रेफर IRC, व्हाट मस्ट बी द कवर टू बी कंसिडर्ड, व्हाट मस्ट बी द कवर टू बी कंसिडर्ड। Please refer IRC. It is IRC 112. It must be available here on in IRC 112. अच्छा, एक क्लॉज देखिए, it is पेज नंबर 25 देखिए, IRC 112, इट इज क्लॉज 5.8.1, डिजाइन सर्विस लाइफ 5.8.1, डिजाइन सर्विस लाइफ, द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द डिजाइन सर्विस लाइफ ऑफ सम कॉमन टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। और वहां पर क्या दिया है, अगर आप देखते हो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26, ये मुझे एक क्लॉज दिख गया है, तो मुझे लगा कि आपको पहले बता देना चाहिए। इट इज ऑन पेज नंबर 26 ऑफ IRC 112। व्हाट इज दैट क्लॉज, 5.8.1 on page number 26 that continued up to page number 27. It is table 5.1 on page number 27. It gives the nomenclature of the design service life, useful life. Example, for normal bridges it must be 100 years or more, or bridges unless otherwise specifically classified by the owner. So for all the bridges which are constructed permanently, for them we consider the design life as 100 years. The bridges which we construct temporarily, right, for them we can consider the design life as equal to 10 years or less. Bridges on temporary access roads, bridges for the constructional facility only, those kind of bridges are temporary bridges. एक बार उनका काम खत्म हो गया, then they will not be in service anymore. In that case we can consider 10 years. Otherwise for all the bridges we design for a life span of 100 years. अभी जरा मुझे ढूंढने दीजिए एक मिनट, लेट मी सर्च ए क्लॉज that is reference to the covering, how much cover to be provided, मुझे जरा ढूंढने दीजिए। हाँ, प्लीज रेफर
Section 14 of the code. This section 14 that deals with the durability. It is on page number 114. It is IRC 112 2011 we are talking about. It is section 14 durability. This section covers design for the durability and suggests provision to ensure the adequate durability is achieved. The structure shall be designed such that the deterioration over its design service life does not impede the performance of the structure below that intended, having due regard to the service environment and the anticipated level of maintenance. The structure must be sufficiently durable. One of the main characteristics influencing the durability of concrete is its permeability to ingress of water, oxygen, carbon dioxide, chloride, sulfate, and other potentially deleterious substances. Deleterious substances. So there are certain elements which may be responsible for the durability of the structure. स्ट्रक्चर को ये अंदर जो स्टील है उसको जाकर करोड कर देता है, वीक कर देता है स्ट्रक्चर को. What are those factors? Water, oxygen, carbon dioxide, chloride, sulfate. ये सब अंदर पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए. The degree of permeability is governed by the constituents, the mixed proportion and the workmanship used in this making concrete. प्रॉपर वर्कमैनशिप रहना चाहिए, सही आपने मिक्स डिजाइन यूज करना चाहिए. कंक्रीट मस्ट बी इम्परमिएबल. अगर परमिट होता है तो उसका जो डिजाइन लाइफ है 100 ईयर, जब तक उसने सर्व करना चाहिए. डिट्रोटिएशन उससे पहले नहीं होना चाहिए. A suitably low permeability can be achieved by having the adequate cement content, low water cement ratio, and ensuring complete compaction of the concrete followed by the adequate curing. आपको sufficient curing करना पड़ेगा, compaction करना पड़ेगा, low water cement ratio use करना पड़ेगा, adequate cement content use करना पड़ेगा to ensure that the concrete which you are getting is low permeable. Use of blended cement will also help to achieve low permeability. फिर यहाँ पर क्या दिया? The factors influencing the durability of the concrete. The environment is the very first factor. Second, the cover to the embedded steel. हम यहाँ के लिए बात कर रहे हैं cover to the embedded steel. जो हमने अंदर स्टील रखा है उसको कितना कवर देना चाहिए? So from the durability criteria, it is section 14 of the code. It is on page number 140 of this IRC 112. What are the factors which influence on the durability of the structure? Durability is nothing but the life of the structure. कितना ड्यूरेबल है, कितना लंबा सर्व कर सकता है without failure in strength and serviceability. The environment, the cover to the embedded steel, the type and quality of the constituent material, the cement content and water cement ratio, the workmanship, compaction, curing, shape and size of the member. These are the important factors which affect the durability of the structure. Concrete impermeable रहना चाहिए, तो अंदर जो एलिमेंट हार्मफुल एलिमेंट है those will not get entered inside. वो अंदर पेनिट्रेट नहीं होंगे, तो स्ट्रक्चर को डिटोरिएट नहीं करेंगे. स्टील अच्छा रहेगा. Now here you please refer page number 142. Please refer page number 142. It is table 40.2 on page number 142 of the IRC. What is given here? Durability recommendations for service life of at least 100 years. तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी ब्रिजेस हम डिजाइन करते हैं हम अज्यूम करते हैं कि उसका सर्विस लाइफ मिनिमम 100 इयर्स रहना चाहिए. It is table 14.2. Durability recommendations for service life of at least 100 years. क्या दिया यहाँ पर? For 20 mm as the nominal aggregate size. Different exposure conditions are given. Minimum water, maximum water cement ratio is given. Minimum cement content is given. Minimum grade of concrete is given.
and minimum cover to the steel is also mentioned here. So this table is very important to us. It is from the environmental exposure conditions. There are 4 environmental exposure conditions are defined: moderate, severe, very severe, and extreme. And these conditions are defined here in a table. It is table 14.1 on page number 141. Classification of the service environment: moderate, severe, very severe, extreme. Are you referring this IRC? प्लीज रेफर IRC. आपके पास ये, इसके लिए मैंने पहले बोला ये सब आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए. अगर अवेलेबल नहीं है तो देयर इज नो सेंस इन अटेंडिंग द लेक्चर. आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं कहां से क्या बता रहा हूं. वो सब आपको पता रहना चाहिए और आप वहां पर कुछ तो ऐसे नोट करते रहिए कि विच आर द टेबल्स, विच आर द क्लॉजेस, विच आर द पेजेस आर टू बी रेफर्ड. So it is available on page number 141. Moderate environmental condition: concrete dry or permanently wet. या तो dry रहना चाहिए या permanently wet condition में रहना चाहिए. The concrete which is continuously underwater. So that is called as the moderate environmental condition of exposure. Severe: concrete wet रहेगा, rarely dry रहेगा, humid रहेगा where the relative humidity is more than 70%, completely submerged in sea water below mid tide level, concrete exposed to the coastal environment. That is considered as the severe environmental condition. Then very severe, उसके लिए भी डिफाइन किया है. Moderate humidity, relative humidity is from 50 to 70%. Concrete is exposed to the airborne chloride in marine environment, freezing condition while wet. Extreme condition: cyclic, wet and dry. Then that is the extreme. और वहां पर और बहुत सारी चीजें दिया है. तो when we are constructing this bridge, what nature of environmental condition the structure will be subjected to? Accordingly हमको पता रहना चाहिए कि which of the environmental conditions of exposure are to be considered. Then accordingly हम maximum कितना water cement ratio ले सकते हैं, minimum cement content कितना रहना चाहिए, minimum grade of concrete क्या use करना चाहिए. This table is very important. और मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करना चाहिए. So here we are having the conditions for the minimum cover. देखिए यहां पर जो पेज नंबर 142, ये रीड करते रहना चाहिए क्लॉजेस. यहां पर दिया है ड्यूरेबिलिटी प्रोविजंस, कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शंस एंड कवर. तो यहां जो दिया है, cover or the clear cover is the distance from the concrete surface to the surface of the nearest reinforcement, including links, stirrups and surface reinforcement. Cover is more important from the consideration of the corrosion of the steel in concrete. The cover should at least be equal to the depth of likely chloride increased by diffusion over a time period equal to the design service life. डिजाइन सर्विस लाइफ में अगर क्लोराइड अगर अंदर पेनिट्रेट होता है तो उसको अंदर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, व्हाट इज द रेट एट विच इट विल गो इनसाइड, उसके अकॉर्डिंगली हमको कवर डिसाइड करना पड़ेगा. ज्यादा कवर रहेगा तो ये हार्मफुल एलिमेंट को अंदर पहुंचने के लिए इट विल टेक मोर टाइम. तो जैसे अगर आप देखोगे मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, तो कवर मिनिमम कवर इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग 40 mm, 45 mm, 50 mm and 75 mm like that. क्योंकि जितना इन्वायरमेंटल कंडीशंस स्ट्रक्चर के लिए खराब रहेगा उतना ज्यादा कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट द हार्मफुल एलिमेंट मस्ट टेक मोर टाइम टू गो इनसाइड टू corrode the steel. The cover should at least be equal to the depth of likely chloride increased by diffusion over a time period equal to the design service life. Chloride diffusion coefficient in concrete depends upon the water cement ratio and the cement type. इसके लिए हमने वाटर सीमेंट रेशियो को भी लिमिट किया है और सीमेंट का कंटेंट भी हमने डिसाइड किया कि मिनिमम इतना कंटेंट रहना चाहिए. इट इज लोअर फॉर द ब्लेंडेड सीमेंट. इसके लिए अगर एनवायरमेंटल कंडीशन ज्यादा खराब है तो वी मस्ट प्रेफर द ब्लेंडेड सीमेंट. ये सब बहुत बारीक बारीक चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. It is possible to select combination of the water cement ratio and the cover thicknesses to achieve the objective. However, the selection of the cover should also take into account
other structural aspect like the safe transmission of the bond forces and control of crack width. हम बहुत ज्यादा कवर भी नहीं प्रोवाइड करना चाहिए. अगर हमने बहुत ज्यादा कवर प्रोवाइड कर दिया तो वहां पर वो क्रैक को अरेस्ट नहीं कर पाएगा. अगर कंक्रीट क्रैक होने का कोशिश करता है तो स्टील विल बी देयर टू अरेस्ट दैट. अगर वहां पर स्टील ही नहीं है तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी दैट द कंक्रीट विल गेट क्रैक. तो कवर के लिए एक रिस्ट्रिक्शन भी है, बहुत ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए. और बॉन्ड भी प्रॉपर्ली ट्रांसफर करना. द स्ट्रेसेस मस्ट गेट प्रॉपर्ली ट्रांसफर फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट, फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील. So for that steel must not be at far away from the surface. कवर की भी एक लिमिट है. So the minimum cover which are given here. अब हमने क्या environmental condition consider करना चाहिए? Then what must be the cover? चलिए please suggest me. Who will answer this question? It is page number 142. Please refer and tell me what environmental, because the environmental conditions are not mentioned in the code, in the question. अब आपको environmental condition assume करना पड़ेगा. Assume some environmental condition, then that will give us what must be the grade of concrete minimum. That will give us what must be the minimum cover. चलिए, who will answer? Please refer table 14.2, page number 142. Refer table 14.2, page number 142, and please tell me हमने environmental conditions क्या assume करेंगे, then what must be the minimum cover to be considered. Minimum clear cover, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हमको जो चाहिए spacing, हमको जितना eccentricity चाहिए, do we have that much of space available, that I want to verify. चलिए बोलिए क्या environmental condition लेंगे. Assume either that must be given in the question. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमको assume करना पड़ेगा. चलिए बोलिए कौन से environmental condition assume करना चाहते हैं. ओके, ठीक है सर. So we are assuming moderate environmental condition, moderate. Then what must be the minimum cover in that case? What is the minimum cover? For moderate environmental condition, what is the minimum cover the code suggests? Okay, fine. Thank you, sir. Thank you, Amir. तो फिर मिनिमम कवर कितना बोला है कोड ने, आईआरसी ने? इन केस ऑफ मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशन, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम कवर टू दिस स्टील? ये यहाँ दिया है टेबल 14.2 में. चलिए बोलिए मुझे फास्ट. 40 mm. ओके फाइन, थैंक यू. 40 mm इज द कवर. चलिए या तो मिनिमम लेंगे या उससे थोड़ा ज्यादा लेंगे. इफ आई अज्यूम मिनिमम, so this clear cover is 40 mm. Now what must be the diameter of bar? अगर मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन है तो हमको पता रहना चाहिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या यूज कर सकते हैं, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना रहना चाहिए, एंड व्हाट मस्ट बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट. सी हियर, for the moderate environmental condition, the maximum water cement ratio can be used is 0.45. Minimum cement content is 340 kg per meter cube, and the minimum grade of concrete is M25. तो हमने तो यहाँ पर कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है, M60, और FCI का वैल्यू लिया है हमने 50 MPa. So this is all right. The minimum grade of concrete to be used is M25. We are using more than that. Minimum की cover is 40 mm. ठीक है. Now consider certain diameter of bar. As it is bridge, it is of major importance. Sam considering the diameter of bar minimum is equal to 12 mm. Okay. अब ये बोलिए, और सपोज ये जो डक्ट है, बिकॉज दिस इज ए प्रीस्ट्रेस कंक्रीट पोस्ट टेंशन डेक स्लैब ब्रिज. So the duct we have to provide, inside of duct we will provide the cable. Say the duct diameter we are assuming as 50 mm dia duct, right? तो इसका यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी हमको कितना मिल रहा है, व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी पॉसिबल? ये कितना हो जाएगा नीचे से अगर हम देखते हैं, हाउ मच दिस विल बी, द इफेक्टिव कवर विल बी 40 प्लस 12
ये डायमीटर, फिर उसके ऊपर ये बार है, इसका भी ये डायमीटर 12 mm रहेगा, प्लस इसका हाफ। अच्छा, ये कितना हो गया? हाउ मच दिस विल बी? अगर इफ आई एज्यूम दैट द डक्ट इज केप्ट जस्ट टचिंग दिस रेनफोर्समेंट, हाउ मच दिस विल बी? इट इज 24। सो 24 मींस इक्वल टू 64 mm हो गया है। तो ये जो डक्ट है, दिस इज द डक्ट फ्रॉम द सरफेस। If I kept this duct touching, if I kept this duct touching the steel, so in that case, the minimum distance from this surface and the distance of this cable or the duct from the surface will be equal to 64 mm. What the code suggests, where the duct must be, it is on the same page. If you will see, it is on page number 142. It is the point 2 from the second point from the bottom. What is that? For post tension tendons, the minimum clear cover measured from the outside of the sheathing shall be 75 mm. Minimum clear cover. Minimum clear cover. अगर ये सरफेस है, अगर ये डक्ट है, then this minimum clear cover in case of the post tension bridges or in case of the post tension structure must be equal to 75 mm from outside of the sheathing. Sheathing is nothing but the duct. डक्ट का बाहर सरफेस तक ये मिनिमम डिस्टेंस 75 mm होना चाहिए। लेकिन इफ आई एम कीपिंग इट जस्ट टचिंग, तो फिर 64 mm ही आने वाला है। इसका मतलब आई कैन नॉट कीप इट जस्ट टचिंग द रेनफोर्समेंट, थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, ऐसे, राइट, थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगर ये 75 mm क्लियर कवर है, दिस क्लियर कवर इज 75, क्योंकि इफ आई केप्ट इट जस्ट टचिंग, तो फिर मुझे सिर्फ 64 mm का क्लियर कवर मिलेगा। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? देयर इज दिस क्लॉज, द मिनिमम क्लियर कवर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द शीटिंग टू द सरफेस मस्ट बी 75 mm. इट इज अवेलेबल इन पेज नंबर 140. व्हाट इज दैट? पेज नंबर 142. So if it is 75 mm, तो ये अगर 75 mm का क्लियर कवर हो गया है, so how much must be the effective cover? Effective cover must be, क्योंकि डक्ट का डायमीटर हमने 50 mm अज्यूम किया है, so half of that up to the center of this, so this must be equal to 100 mm. If this is equal to 100 mm, then what is the maximum eccentricity that can be provided practically? हम कितना eccentricity प्रोवाइड कर सकते हैं practically यहाँ पर? How much this was? 225. So the maximum eccentricity that can be provided practically is 225 minus 100. So that will be equal to 125 mm only. Is that right? ये समझ में आया है क्या? How did we come to this conclusion that the maximum eccentricity that can be practically provided is 125 mm only? Theoretically मुझे, और from the design requirement, this was the pre-stressing force required and this was the eccentricity required. अब मैंने ये वेरीफाई किया है कि हम इतना eccentricity प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? Then what did I come to know here is, मैंने पहले ये देखा है कि स्टील हमको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। Perpendicular to the direction of width, that is in the direction of span, we need to provide the reinforcement first. पहला ऐसा रेनफोर्समेंट रहेगा, दूसरा उस पर ऐसा एक रेनफोर्समेंट रहेगा, सो वी विल गेट ए नेट। इन केस ऑफ स्लैब वी प्रोवाइड द नेट, तो यहाँ पर ये दूसरा रेनफोर्समेंट रहेगा इन द अदर डायरेक्शन, राइट? पहले कैसे रहेगा? सो दीज आर द रेनफोर्समेंट बार्स, दूसरा ये रेनफोर्समेंट, उसके ऊपर केबल यहाँ पर रहेगा, फिर देन वी विल हैव द केबल्स। सो दीज आर द केबल्स व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस विड्थ इन द डायरेक्शन ऑफ स्पैन दे विल बी। तो ये हो गया है डक्ट फॉर केबल्स। स्टील का मिनिमम कवर कितना है? 40 mm। अगर मैं ये मॉडरेट नहीं, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम अगर ऐसे कंसीडर किया रहता तो ये कवर का वैल्यू और बढ़ जाता, तो एक्सेंट्रिसिटी और कम हो जाती। फिर वी हैव कंसीडर्ड अज्यूम मॉडरेट, तो फिर मिनिमम कवर इज 40 mm। हमने बोला चलिए ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग मिनिमम,
Period 12 mm is the diameter of bar we have assumed because this is bridge. It is of major importance. तो इसके लिए कम से कम 12 mm यूज कर लेंगे. So these are 12. This is also 12. तो मैंने देखा है कि अगर ये टचिंग रखता हूं इसको, then what is the maximum distance from the outside of the surface to the outside of the sheeting? That is 64 mm only. 40, 50, 60, 64. लेकिन एक क्लॉज बोलता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द शीटिंग द डिस्टेंस मस्ट बी मिनिमम 75 mm फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द शीटिंग. From the outside of the sheathing, the distance must be minimum 75 mm. अगर मैंने ये 75 mm कंसीडर किया, it means that I cannot keep the steel touching the steel. थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा केबल कंडक्ट को. So if it is 75 mm, if I assume that the diameter of the duct is 50 mm, then the effective cover available must be 75 plus that 25. So it will be 100 mm as the effective cover. अगर 100 mm effective cover है, then the maximum eccentricity that can be provided is equal to 225 minus 100, that will be equal to 125 mm only. Is it okay? क्या ये समझ में आया है मैंने क्या बताया है? हम मैक्सिमम eccentricity कितना प्रोवाइड कर सकते हैं. So this is the maximum eccentricity that is practically possible to provide. And this is less than 215.16 mm. Is that right? Is it okay? तो इसका मतलब we have to restrict the eccentricity. So restrict the eccentricity. So we have to restrict the eccentricity. अगर हमने eccentricity को restrict किया, then how will you get the revised value of pre-stressing force? कहां से मिलता है हमको? F inferior के इक्वेशन से P by A plus PE by ZB is equal to F inferior. So P is equal to F inferior A ZB divided by ZB plus AE. Put everything here in the equation and get the revised value of the pre-stressing force. चलिए मुझे ये आंसर बताइए कितना रहेगा. What is F inferior? 13.81. What is area? 415 to 10 raised to power 3. What is the section modulus? 33.75 to 10 raised to power 6 divided by ZB 33.75 to 10 raised to power 6 plus area 415 to 10 raised to power 3. What is the eccentricity which is provided here? Maximum it is restricted to 125, so this is 125. And get the revised value of pre-stressing force. तो हम इतना pre-stressing force और eccentricity required था, लेकिन इतना eccentricity we cannot provide. So we have to restrict the eccentricity and then revise the magnitude of pre-stressing force required. So what is the pre-stressing force required now? चलिए बोलिए मुझे कितना pre-stressing force चाहिए. We have restricted the eccentricity. Then what is the pre-stressing force required? So the new value of pre-stressing force and the eccentricity is 125 mm. And get the new value of pre-stressing force. 2330. Thank you, Amir. So it is 2330 kilonewton. Will someone please support this answer? अगर कोई और एक आदमी जो ये आंसर को सर्टिफाई कर देगा, दिस इज राइट. अमीर इज गिवन 2330. कोई और इसको सर्टिफाई करेगा? Will someone please support this answer? Is it right? 2330. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
So the pre-stressing force and the eccentricity is available now. Okay. अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट हमने? What we have to do next is safe cable zone. Safe cable zone. We have to provide the cable in the safe cable zone. Safe cable zone means what? Say this is the span. It is supported here. Say this is the center line. Here is the neutral axis. So what is the safe limit in which the cable is to be provided? The eccentricity must be less than or equal to, and the eccentricity must be more than or equal to. What are the equations for the limit of eccentricity? Must be more than or equal to ZB divided by eta P FTW plus MS upon eta P plus MI upon eta P minus ZB upon A. Eccentricity must be less than or equal to ZB divided by P FCT plus MS upon P minus ZB upon A. These equations will give us the limit for eccentricities. चलिए अभी मुझे ये सब आंसर चाहिए. Now I require all these answers. Please give me all these answers. ZB upon P. ZB upon P. What is the value of ZB? 33.75 into 10 raised to power 6 divided by P. P का वैल्यू कितना है? 2330 into 10 raised to power 3. What is the value of FCT? The permissible values of stresses in concrete, in compression and transfer. ये वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. 0.5 times of FCI or 30 mm, whichever is minimum. FCI was equal to the strength of concrete at the time of transfer. That was 50 MPa. It is considered in the question. So 0.5 times of that is nothing but 25 MPa. Either it must be 25 MPa or 30 MPa, whichever is lesser of the two. So the value of stresses in concrete at transfer must be equal to the lesser of these two. So that must be equal to 25 MPa. What is MS upon P? MS upon P is nothing but MS upon P. What is this MS upon P? Is the moment 225.28 into 10 raised to power 6 divided by 2330 into 10 raised to power 3. Next is ZB upon A. See, ये यहाँ पर तो rectangular section है. हमको पता है ZB is BD square by 6 divided by A. So that is nothing but actually D by 6. So it is 450 divided by 6 and that will be equal to 75 now. ZB upon eta P into permissible values of stresses in tension at working FTW. और टेंशन में at working these are equal to 0 only because we have considered as the type 1 element. MS upon P is available. उसको हमको eta से divide करना है. What about the MI upon P? 147.83 into 10 raised to power 6 divided by P. P is the pre-stressing force 2330 into 10 raised to power 3. ZB upon A is already available. Now get all these required answers
and tell me the value for eccentricity must be less than or equal to. ये सब वैल्यूज मुझे बताइए. ZB upon P कितना रहता है? That is to be multiplied by with FCT, the permissible values of stresses in concrete at transfer. अच्छा, concrete at transfer that is 25. So ZB upon P multiplied by 25 plus MS upon P ZB upon A. चलिए बोलिए मुझे ये सब आंसर. हाँ, कितना है? How much this ZB upon P is? चलिए यार, चलिए फास्ट कैलकुलेशन करो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है. We have to conclude this. और इसके बाद मुझे याद दिलाइए, अगर IRC 70R लोडिंग होता तो सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता? IRC क्लास ए लोडिंग होता तो सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता? IRC क्लास बी लोडिंग होता तो सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता? वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सॉल्यूशन. चलिए मुझे हेल्प कीजिए. प्लीज आंसर मी. प्लीज गिव मी द आंसर्स. अगर आंसर नहीं दोगे तो सॉल्व नहीं होगा यार. ZB अपॉन P कितना आता है? अरे कैलकुलेटर लेकर क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? चलिए नुमान, साहिब, सऊद, आमिर और वो किधर गया? स्वामी तो आजकल अटेंड करता है कि नहीं? $14.49 ऐसे लिख देंगे. What is that? 14.89 is first answer. 14.89. So this will be 14.89 into 25 plus MS upon P. ये कितना रहेगा? चलिए फटाफट आंसर कीजिए. 96.68. 96.68. So that will be plus 96.68 minus 75. चलिए मुझे ये आंसर दीजिए. नेक्स्ट ये एक्सेंट्रिसिटी मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू. ये 0 हो गया. MS अपॉन ईटा P, MS अपॉन ईटा P 96.68 divided by 0.8 plus MI upon eta P. चलिए MI upon P का वैल्यू कितना है? What is the value here? MI upon P divided by 0.8 minus 75. 63.44. Thank you. So this is equal to 63.44 MPa. So this is 63.44 mm. Okay, fine. 63.44 mm. Now tell me the answer. Eccentricity must be less than or equal to, and it must be more than or equal to. कितना आ रहा है ये? $393.93 and must be more than or equal to 125.15. Okay, fine. So we have got the limit here. Eccentricity must be more than or equal to 125.15. So whatever this small 15 we are getting here, that must be because of the approximations. हमको eccentricity must be more than 125 आना चाहिए क्योंकि हमने उतना प्रोवाइड किया है वहां पर. एक वही लिमिट आएगा. And 393 means it will go outside of the section. यहाँ रहेगा. ये हो गया है 393.93 mm. These are the limit for the eccentricities.
at midspan. And what about at support? सपोर्ट पर ये मोमेंट बिकॉज ऑफ सेल्फ एंड इम्पोज लोड विल आल्सो बिकम जीरो. ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. तो हाउ मच इट विल बी हियर? ये आंसर eccentricity must be less than or equal to 14.89 multiplied by 25 minus 75, and eccentricity must be greater than or equal to ये 000 minus 75. Minus only indicates that it is above the neutral axis. तो above the neutral axis 75 में हो जाएगा. This negative only indicates that eccentricity must be less than or equal to 75 but above the neutral axis. और ये आंसर कितना आ रहा है? 14.89 into 25 minus 75, 297.25. 297 इसका मतलब ये भी बाहर निकल जाएगा इसके. दिस इज 297.25 mm. Now join these 2 points. अपर का ये अपर से और लोअर को ये लोअर से. ये यहाँ पर आएगा सपोज लोअर. तो अपर ऐसे आएगा, लोअर ऐसे आएगा. चलिए. So this is the safe cable zone. Is it right? This is the safe cable zone. The cable is to be provided within this limit. तो अब हम केबल कैसे प्रोवाइड रखना चाहिए? What do you want to suggest? What must be the cable profile? और हमने उसको मिड स्पैन पर तो वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द एक्सेंट्रिसिटी. What do you want at support? केबल कैसे रखेंगे अभी बोलिए. Who will suggest the cable profile? हमने लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्रोवाइड पैराबोलिक केबल. Because the bending moment diagram is parabola, the dominant is self-weight, और self-weight का bending it is uniformly distributed load throughout. So the bending moment diagram is parabola. So the cable profile must also have the same cable nature. It is parabolic cable with eccentricity at midspan 125 mm. एक्सेंट्रिसिटी एट सपोर्ट कहां रखते हैं इसको? कॉन्सेंट्रिक कर देंगे. डेट विल बी सिंपल. चलिए जीरो एक्सेंट्रिसिटी. सो इट मींस दैट इट विल बी ए कॉन्सेंट्रिक केबल. तो हाउ विल इट अपीयर? दिखेगा कैसे केबल? ऐसे रहेगा. दिस इज द केबल. इज दैट राइट? This is a parabolic cable. Concentric at support, having a maximum eccentricity of 125 mm, and it is within the safe cable zone. It is a parabolic cable. So now we have decided the parabolic cable. But how much must be the spacing? अभी ये केबल जो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है वो in the direction of span ऐसा parabola रहेगा. But what must be this spacing? ये स्पेसिंग कितना रहना चाहिए केबल का? What must be the spacing of cables? ये केबल हमने यहाँ जो रखा है, जो ऐसे जाएगा, ये कितना स्पेसिंग रहना चाहिए? What must be the spacing between the cables? एक केबल यहाँ है, दूसरा केबल इसके पीछे, उसके पीछे, इसके पीछे, because this is the width. एक केबल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे केबल्स है, राइट? क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखेंगे. ये तो मिड स्पैन के ऊपर है. सपोर्ट का अगर मैं सेक्शन लूंगा, दिस केबल विल कम ओवर द सपोर्ट. व्हेन एट द सपोर्ट द केबल विल बी कॉन्सेंट्रिक. तो सपोर्ट पर ऐसे क्रॉस सेक्शन रहेगा. ये जो क्रॉस सेक्शन स्केच किया है मैंने मिड स्पैन का है. एट सपोर्ट द केबल विल बी एट द न्यूट्रल एक्सिस. ओके. नाउ हाउ टू डिसाइड द स्पेसिंग? केबल का स्पेसिंग ये समझ में आया कि केबल हमने कितना प्रिस्टेजिंग फोर्स चाहिए, कितना एक्सेंट्रिसिटी चाहिए, केबल का नेचर कैसे रहना चाहिए. ऑल द थिंग्स वी आर डिसाइडिंग. बीइंग ए डिजाइनर आपको ये सब करना पड़ेगा. सो नाउ वी हैव डिसाइडेड दिस. केबल के एक्सेंट्रिसिटीज क्या रहेंगे और कैसे रहेंगे. नाउ हाउ टू गेट द स्पेसिंग बिटवीन द केबल. ओके फाइन.
क्या करेंगे, फोर्स कैरिड बाय वन केबल, फिर क्या मिलेगा हमको, स्पेसिंग विल बी, स्पेसिंग इज इक्वल टू फोर्स कैरिड बाय वन केबल divided by force acting per meter width, right? The pre-stressing force acting per meter width, the pre-stressing force required per meter width multiplied by 1000. See, spacing of cables, केबल का स्पेसिंग कितना रहना चाहिए, केबल्स का स्पेसिंग, इट इज सेम एज, इफ यू रिमेंबर व्हाट डू वी डू इन केस ऑफ द डिजाइन ऑफ स्लैब, अगर मुझे स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्पेसिंग ऑफ द बार इज नथिंग बट द एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 1000. डू वी डू द सेम थिंग व्हेन वी आर अज्यूमिंग द स्लैब एज 1 मीटर वाइड, और अगर मुझे रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड वी गेट द स्पेसिंग. So the similar thing we are doing here. What must be the spacing of cables? Force carried by one cable divided by the force required per meter width multiplied by 1000 and we get the spacing of cable. What is the force carried by first one cable? That is nothing but the initial stresses multiplied by the area of pre-stressing stage. How much area of pre-stressing stage is? तो हमको कुछ डायमीटर ऑफ बार अज्यूम करना पड़ेगा एंड नंबर ऑफ वायर्स इन ए स्ट्रैंड. देखिए स्ट्रैंड कैसा है, द वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर. अगर आप देखोगे तो स्ट्रैंड ऐसे रहेगा, से दिस इज वन केबल, वन वायर, और इसके राउंड में ऐसे और वायर्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6. सो दिस 7 वायर्स विल मेक ए स्ट्रैंड टुगेदर, राइट? ये 7 वायर मिलके एक स्ट्रैंड बनेगा. दिस इज वन स्ट्रैंड. समझ में आ रहा है क्या? ये सेंट्रली वी आर हैविंग वन वायर और उसके राउंड में 6 वायर्स है एंड दे आर ट्विस्टेड टुगेदर. सो दिस विल मेक वन स्ट्रैंड. दिस विल मेक वन स्ट्रैंड. द स्ट्रैंड, और यू कैन से दैट द केबल, इट कंप्राइजेस 7 वायर्स. कभी कभी क्या होता है, we can provide 19 wires also, क्योंकि हमको अरेंज कैसे करना है. Say this is a wire, फिर इसके तरफ में ऐसे जैसे मैंने बताया 2 3 4 5 6, फिर अगर हम इसके ऊपर रखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे रहेगा. तो it is 12 plus 6 plus 1 and there will be 19 wires in this strand. So this is how we make the strands. Wires are twisted together. I assume this kind of strand. Say there are 7 wires. Assume कर लेते हैं 12 mm diameter के wires होंगे. Say there are 7 wires of 12 mm diameter with the characteristic strength is equal to 1600 MPa. ये सब डिटेल क्वेश्चन में प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं है तो वी आर अज्यूमिंग, अज्यूम. या तो द डिटेल मस्ट बी अवेलेबल इन द क्वेश्चन. इफ द डिटेल्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी हैव टू अज्यूम. मैंने अज्यूम किया, सपोज हम 7 वायर यूज कर रहे हैं, लेट द डायमीटर ऑफ ईच वायर इज 12 mm एंड लेट द इनिशियल स्ट्रेंथ इज 1600 MPa. या तो डेटा क्वेश्चन में क्लियरली अवेलेबल रहना चाहिए. अगर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं. ये मैंने 12 mm अज्यूम किया. अगर आप चाहो तो 10 mm 8 mm 6 mm 15 mm 12 mm 16 mm कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं.
ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मैंने अज्यूम किया प्रीस्ट्रेसिंग स्टील के लिए 1600 एमपीए। अगर आप चाहते हो तो इससे कम ज्यादा कुछ भी अज्यूम कर ले सकते थे। नॉर्मली 1200 से ज्यादा ही रहता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील। अगर आप कुछ चेंजेस या सजेस्ट करना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली वी विल मेक द चेंजेस एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर्स। Yes, say we are assuming this. So, what is the area of pre-stressing steel for one cable? एक केबल के लिए कितना pre-stressing steel है? There are 7 wires of 12 mm diameter. 7 by 4 into 12 square. What is the area of pre-stressing steel? Just check. How much is the area of pre-stressing steel? Area of one wire. There are 7 wires in the strand or in the cable. So this is nothing but the area of pre-stressing steel. Will someone please give me the answer for the area of pre-stressing steel? ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके लिए हम बहुत डिटेल में सब चीज समझते हुए चल रहे हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम काफी फास्ट रहेंगे कंपैरेटिवली, आई होप, क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेस वगैरह यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है सब। So when we will do the problems in future, अब हम वो सब चीज कौन सा क्लॉज कहां से ले रहे हैं वो सब नहीं, हम फिर वो सब डायरेक्टली यूज करते हुए चलेंगे। So it is 791.7. So it is 791.7 mm square. Let us see. मैंने ये डक्ट का डायमीटर अज्यूम किया था 50 mm। क्या उतने डक्ट में इतना एरिया ऑफ स्टील हम प्रोवाइड कर सकते हैं? 791.7 is equal to pi by 4 divided by d square. Suppose where d is the diameter of this strand, then कितना रहेगा उसका डायमीटर? 791.7 multiplied by 4 divided by pi और इसको रूट। कितना डायमीटर आता है मुझे बताइए? That is the diameter of strand। क्योंकि स्ट्रैंड जब हम डक्ट में से पास करेंगे तो कुछ स्पेस भी अवेलेबल रहना चाहिए फॉर द स्मूथ ऑपरेशन। अंदर केबल को इंसर्ट करने के लिए, जैक लगाकर पुल करने के लिए देयर मस्ट बी सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल इनसाइड। नहीं तो अगर रगड़ खाते रहेगा इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड द केबल। देन जब हम पुल करेंगे तो सरफेस हमेशा बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे तो लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन भी होता है। सो देयर मस्ट बी सम गैप अवेलेबल। सो हाउ मच इट विल बी? लेट अस सी व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस स्ट्रैंड आई एम गेटिंग हियर। 144 into 7 कितना आता है? 144 into 7 हजार, और 1000 का अगर रूट लेते तो कितना रहेगा? How much? 30 से ज्यादा रहेगा कुछ। It will be something more than 30, 32, 33 ऐसे कुछ रहेगा। 31, 32, 33। How much we are getting? 31.75. Thank you. So this is 31.75. And what is the diameter of duct we have considered? The duct we have considered of 50 mm. और ये जो स्टैंड है, स्टैंड का डायमीटर आ रहा है 31.75 mm। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल है। कितना स्पेस रहना चाहिए कि केबल इजीली अंदर इंसर्ट कर सके, जैक अगर लगाए तो फोर्स को हम अप्लाई कर सके, खींच सके, फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा लॉस नहीं रहना चाहिए। इतना गैप रहना चाहिए कि व्हेन यू विल पुट द ग्राउट इनसाइड, वो ग्राउट भी सरफेस को चारों तरफ से ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए wherever is the space available। तो दिस इज ऑल राइट। इतना डायमीटर का हम डक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इट इज सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? Spacing. So the area of pre-stressing steel is available. What about the initial stresses? Initial stresses के लिए आपको फिर रेफर करना पड़ेगा कोड। Please refer IRC. How much are the initial stresses in pre-stressing steel? Please refer the code. See, this is available on page number 267। आपको ये कोड रेफर करते रहना पड़ेगा। प्लीज रेफर पेज नंबर 267।
It is Appendix A 4.8.3 क्लॉज जो 266 पेज से चल रहा है 267 पेज नंबर तक. And part 3 of that clause. What is it? Permissible stresses in pre-stressing steel. कौन सा चीज कहां दिया है वो हमको पता रहना चाहिए, कौन सा चीज कहां से लिया है. The maximum jack pressure shall not exceed 90% of 0.1% proof stress. This is the initial stress. For the purpose of this clause, 0.1% of the proof stress shall be taken as equal to the 85% of the minimum ultimate tensile stress. So, for the purpose of this, ये जो 0.1% of the proof stress is given, it is that can be considered as equal to 0.1% क्या कह दिया? The 0.1% of the proof stress shall be taken as equal to 85% of the minimum ultimate tensile stress. So it is 85% of the ultimate tensile stress. That you can call as Fu or that can you call as Fp. है ना? Ultimate tensile stress of the pre-stressing steel. So it's not the 0.9 of 0.85 times of Fp. The characteristic or the ultimate tensile stress of steel. कितना था? 0.9 into 0.875. 8 बजे 9 में बदल के 0.6 8 ना है 72 73 74 75 76 76. Is it right? 0.765 Fp. अगर आपको याद आ रहा होगा तो इन IS 1343 also, in IS code 1343 जो प्रीस्ट्रेसिंग कंक्रीट का है उसमें भी एक क्लॉज था मैक्सिमम इनिशियल परमिसिबल स्ट्रेसेस आर टू बी कंसीडर्ड एज इक्वल टू 76% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील और 76% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील. एक ऐसे क्लॉज था इन IS 1343 2012. तो वो यही है 0.765 Fp. वो 0.76 कंसीडर किया था. This is available on page number 267. Please refer another clause. It is clause 7.9, which is available on page number 61. Please refer clause 7.9. What is that clause? See. It is page number 61, 7.9. Pre-stressed members and structures. General, maximum pre-stressing force. The maximum force applied to the tendons at the active end during the tensioning shall not exceed 90% of 0.1% of the proof load. It is the same thing. 90% of 0.1%. So it is 90% of 0.1% of the proof stress. यहाँ पर फोर्स स्ट्रेसेस के लिए बोलो तो प्रूफ स्ट्रेस, लोड के लिए बोलो तो प्रूफ लोड. फिर क्या देता है नेक्स्ट पेज पर? इफ यू कीप ऑन रेफरिंग, इट इज पेज नंबर 62. प्लीज रेफर दिस क्लॉज 7. प्लीज रेफर 7.9.2 on page number 61. That continues up to page number 62 and part 3 of this clause. Maximum pre-stressing force P naught, that is the initial pre-stressing force, applied to the structure immediately after transfer, that is after losses due to the elastic shortening and anchorage slip, shall not be greater than 75% of FCK. Initial stresses cannot be more than 75% of FPK. That is mentioned here. Or it cannot be more than 0.85. 0.85 or 0.1% of
0.1% of proof stress. ये भी एक क्लॉज है, राइट? Please refer here. The maximum pre-stressing force P was applied to the structure immediately after transfer, that is after losses due to the elastic shortening and anchor slip, shall not be greater than 75% of FCK or 0.85 or 0.1% of the proof load, whichever is lesser. Refer figure 6.3. अभी हमको एक पॉइंट फिगर 6.3 में, अच्छा 0.1% of proof stress, 0.1% of proof stress का क्या मतलब है? इट इज 85% of FP. तो यहां पर देता है cannot be more than 0.85 multiplied by 0.1%. So that is again 0.85 into FP. Here it is 0.75 times of FPK. So we are having so many different clauses. Initial stresses cannot be more than this. अच्छा ये 0.85 into 0.85 कितना आता है, जरा मुझे कोई बताएगा? How much is 0.85 to 0.85? Because I want to come to certain conclusion कि हमने कितना प्रोवाइड करना चाहिए फाइनली. What must be the initial stresses? .7225. Okay, fine. Thank you. So this cannot be more than equal to 0.7225 FP. Right? Now please refer figure 6.3, क्योंकि यहाँ पर बोला है maximum pre-stressing force P not applied to the structure immediately after transfer, that is after losses due to the elastic shortening and anchor slip, shall not be greater than 75% of FPK or 0.85 or 0.1% of the proof load, whichever is less. Refer figure 6.3. Where is that figure 6.3? Figure 6.3 is available on page number 6.3. Where is it? Figure 6.3 available on page number 33. Page number 33. This is figure 6.3. So what is mentioned here? Figure 6 is a representative stress strain curve for the wires, stress relieved, strands and bars. Strand means pre-stressing steel भी आ गया है यहाँ पर. This is figure 6.3. So 0.1% proof stress. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो that will come to 0.87 FP. 0.1% of the proof stress. तो ये एक फिर एक क्लॉज क्या बोल रहा है? 0.85 of 0.87 times of FP. एक क्लॉज ये बोलता है FI cannot be greater than 0.1%. उसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो इट इज 0.87 टाइम्स ऑफ FP. अगर ये सब में से हम देखेंगे what is the least of all these, so you will come to this 0.7225 FP. तो इसका मतलब इनिशियल स्ट्रेसेस मैंने इतना रखना चाहिए. FI is equal to 0.7225, FP is equal to 1600 MPa. So what are the maximum initial stresses? Those we can consider in the wires. हम वायर्स को इतना स्ट्रेच कर सकते हैं. एक क्लॉज बोलता है 0.9 of 0.85 FP, that is 0.1% of the characteristic strength. फिर एक बोलता है 0.75 times of FCK, और ये जो FPK है that is nothing but FU only. FPK is nothing but FP. कैरेक्टरिस्टिक ये भी डिफाइन किया है. FPK, see here it is defined. FPK, ultimate stresses or the characteristic tensile stresses. तो ये सब क्लॉजेस का whatever is the final of all this is the maximum initial stresses which can be considered in the wire are 0.7225 into FP. So how much that will be? हम मैक्सिमम कितना इनिशियल स्ट्रेसेस दे सकते हैं? 0.7225 into 1600. कितना है? 1156. Thank you. So this is equal to 1156 MPa. So this is multiplied 1156 multiplied by
791.7, and we will get the force that will be carried by one cable. How much is the force carried? This stresses multiplied by the area, and we get the force that will be carried by one cable. एक केबल में कितना फोर्स रहेगा, कितना फोर्स कैरी कर सकता है? द फोर्स कैरीड बाय वन केबल. चलिए बताइए मुझे, हाउ मच इज द फोर्स दैट विल बी कैरीड बाय वन केबल? 12 समथिंग 900 के आसपास आना चाहिए. 915.2. थैंक यू. 915.2 किलो न्यूटन. सो द स्पेसिंग इज इक्वल टू 915.2 डिवाइडेड बाय 2330 मल्टीप्लाइड बाय 1000. चलिए कितना आ रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस, व्हाट मस्ट बी द स्पेसिंग ऑफ केबल्स? ये केबल कितना स्पेसिंग पर रहना चाहिए? हाँ, what must be the maximum spacing of cables? चलिए, take the ratio multiplied by 1000. 392.7. अच्छा, 392. So it is 392.7 mm. कितना रखेंगे फिर हम मैक्सिमम स्पेसिंग? Keep is equal to 390 mm. थोड़ा सा कम कर देते हैं. And in the multiples of 10 ऐसा रखेंगे, say 392. So it is 390. This is the spacing. Say provide them at a distance of 390 mm center to center. Is it okay? So this is how finally हमने ये वेरीफाई कर लिया कि सेक्शन सेफ है या नहीं है. फ्रॉम द लिमिटेड ऑफ सर्विसिबिलिटी इंटरनल स्ट्रेसेस वी हैव वेरीफाइड दैट. फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कितना प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स चाहिए, फिर कैलकुलेट किया कि कितना एक्सेंट्रिसिटी चाहिए ऑप्टिमम, फिर ये वेरीफाई किया कि जितना एक्सेंट्रिसिटी चाहिए इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड दैट मच ऑफ एक्सेंट्रिसिटी. प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको स्टील वगैरह रखना है, केबल है, उसका डायमीटर है, डक्ट है. तो फिर हमको समझ में आया कि द एक्सेंट्रिसिटी इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड. देन वी हैव रेस्ट्रिक्टेड द एक्सेंट्रिसिटी. रेस्ट्रिक्ट किया एक्सेंट्रिसिटी, तो फिर हमने रिवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेट किया. फिर उसके बाद सेफ केबल जोन हमने समझ में आया कि हमने केबल कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए. सो विद इन द परमिसिबल लिमिट्स वर्टिकली वी हैव केप्ट द केबल within those vertical limits, that is safe cable zone. फिर हमने डिटरमाइन किया कि केबल्स का स्पेसिंग कितना रहना चाहिए. हम कितने वायर रख रहे हैं इन वन स्ट्रैंड, इन वन केबल, हाउ मेनी वायर्स वी आर कंसीडरिंग, उसका डायमीटर क्या ले रहे हैं, उतना डक्ट में स्पेस अवेलेबल है कि उतना वायर इंसर्ट करने के लिए. फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ द केबल्स, केबल्स कितना स्पेसिंग के ऊपर रख रहे हैं. एंड फाइनली वी कम टू कंप्लीट डिजाइन. हियर द डिजाइन एंड्स. डिजाइन यहां कंप्लीट हो जाता है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन. इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू वेरीफाई इट इन फ्लेक्चर, आई हैव टू वेरीफाई इट इन शेयर. ये जितना फ्लेक्चर और शेयर है उतना रेजिस्ट करना चाहिए. मैंने डिजाइन किया विथ रेफरेंस टू द लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इंटरनल स्ट्रेसेस. अब हम इसको वेरीफाई करेंगे. व्हाट इज द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स प्रोवाइडेड? हाउ विल यू नो व्हाट इज द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स प्रोवाइडेड? द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स प्रोवाइडेड कैसे मिलेगा? हाउ मच वाज रिक्वायर्ड? 2330 डिवाइड बाय द स्पेसिंग हमने कंसीडर किया 390, एक्चुअली चाहिए था 392.7. इसका तो हमने थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड कर दिया.
इतना स्पेसिंग चाहिए था, हमने थोड़ा सा कम स्पेसिंग किया, इसका मतलब वी हैव प्रोवाइडेड लिटिल मोर. टेक द रेशियो एंड यू विल गेट द pre-stressing force required. So what is the pre-stressing force which is provided? Next, apply check in ultimate limit state. अब हम इसको चेक कर रहे हैं अल्टीमेट लिमिट स्टेट. यूएलएस जो हमने एकदम शुरू में बताया था कि जो लिमिट स्टेट मेथड है उसमें दो चीजें हैं, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी. तो उसको क्या बोला था उसने? सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, एसएलएस. और जो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ या कोलैप्स जिसको बोलते हैं उसको बोलता है अल्टीमेट लिमिट स्टेट, यूएलएस. नाउ वी आर चेकिंग इट इन यूएलएस, वी आर चेकिंग इट इन फ्लैक्चर, अल्टीमेट लिमिट स्टेट फ्लैक्चर. फॉर्मूला सेम है जो हमने वहां पर यूज किया था प्री-स्ट्रेस कंक्रीट में. व्हाट वाज दैट? एपी एफपीबी, एपीएस एफपीबी इन ब्रैकेट डी माइनस 0.42 times of XU. Now please keep that IS 1343 also available. इसके लिए मैं ग्रुप में बोलते रहता हूं कि all IRCs IS 1343 कैलकुलेटर ये सब अवेलेबल रहना चाहिए. So the pre-stressing force which is actually provided is 2346.13, 2346.13 kilonewton. And where is that सुफियान? मुझे लगता है कि सब लोग आपस में बांट लेते हैं शायद. एक दिन सुफियान आंसर करते रहेगा, एक दिन आमिर आंसर करते रहेगा, एक दिन अनुराग आंसर करते रहेगा. सो दैट सबको ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ यार ये प्रेजेंट है. दैट इज नॉट फेयर. ऑल ऑफ यू आई एक्सपेक्ट टू बी इक्वली एक्टिव. ओके फाइन. सो दिस इज द फार्मूला फॉर द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. सेक्शन इतना रेजिस्ट करने वाला है. And what is the ultimate moment acting? Ultimate moment acting. कितना मोमेंट एक्ट हो रहा है, कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, हमको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. अगर हमने इतना प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स प्रोवाइड किया है, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग स्टील व्हिच इज प्रोवाइडेड? कितना रहेगा? 2346.13 into 10 raised to power 3 divided by the initial stresses are 1156. So this is nothing but the area which is provided. And all these problems we are solving for per meter width of slab. 1 meter wide slab के लिए ये सब खेल चल रहा है. All this is for 1 meter wide slab. So area of pre-stressing steel provided is equal to this divided by this and get the area of steel provided. जितना हमको required था थोड़ा सा ज्यादा होगा ये. So what is the area of steel provided? 2346.13 divided by 1156. What is the area of pre-stressing steel provided? 2029.53. 2029.53 into FPB. How to get value of FPB? पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा AP FP divided by BDFCK. That is the area of pre-stressing steel index. 2029.53. The characteristic strength of steel is 1600. The width is 1000 mm. What is the effective depth? Effective depth कितना हो गया है? Where the position of the cable is? The cable is provided at an eccentricity of 125 mm. So this is the effective depth. The effective depth will be equal to ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? Half of 450. So that was 225.
So the effective depth will be equal to 225 plus 125. So that is 350 mm. So D is 350 multiplied by the characteristic composition of the concrete is 60. So get the area of steel index. From here you will get 0.87 FP. FPB divided by 0.87 FP. Here you will get the value of XU by D from IS 1343 2012. This is to be used. Get the area of steel index. The area of steel provided is equal to 2029.53. Okay, done. So now determine the ultimate moment of resistance and then compare it with the ultimate moment acting. 0.155. Okay, fine. This is equal to 0.155. So the values are available in IS 1343 corresponding to 0.15 corresponding to 0.2 and it is post टेंशन एलिमेंट. तो क्या रहेगा? अभी मेरे पास 1343 अवेलेबल नहीं है कि आपको आंसर देना पड़ेगा फॉर पोस्ट टेंशन एलिमेंट. For 0.15, for 0.2, you will have value here. You will have value here. Now interpolate corresponding to 0.155. XU by D का वैल्यू यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा. You have to interpolate the value and get the value for FPB and get the value for XU. चलिए मुझे ये आंसर दीजिए. Please give me these answers. FPB and XU. FPB divided by 0.87 FP. चलिए मुझे आंसर दीजिए. Then we can have the ultimate moment of resistance and we can compare it with the ultimate moment acting. All the bridges we designed for a lifespan of 100 years. Ultimate moment acting. Ultimate moment acting. चलिए, what are the values? FPB is 1385.04. Thank you. So this is equal to 1385.04. In bracket D is 350 minus 0.42 into XU. What is XU? And then you get here the ultimate moment of resistance. Obviously per meter width. Per meter width. 1 मीटर वाइड स्लैब के लिए इतना अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है फॉर 1 मीटर वाइड स्लैब. दिस इज द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. फिर हम डिटरमाइन करेंगे हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग, सॉरी, और द मोमेंट एक्टिंग. व्हाट इज XU? हमको अलग अलग वैल्यू ऑफ XU बाय D अवेलेबल है. मेरे पास 1343 अभी अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई आई कांट हेल्प यू. आप ही को मुझे देना पड़ेगा वैल्यू 114.03. थैंक यू नोमन. इट इज 114.03. So now you are having the values for XU by D, FPB, area of pre-stressing steel. All the things are available. Then you get here what is the ultimate moment of resistance.
Please do the calculation. What is the ultimate moment of resistance? APFPB in bracket D minus 0.42 XU. What is the ultimate moment of resistance? $849.34 is equal to 849.34 kilonewton meter. Okay, fine. This is the ultimate moment of resistance. Now I will determine the ultimate moment acting. How much is the ultimate moment acting? See, bending moment due to deck slab plus bending moment due to wearing coat plus bending moment due to imposed load. This is when strip is considered in deck slab. But when 1 meter wide strip is considered in footpath, what it will be? The bending moment due to deck slab plus footpath plus railing plus bending moment due to imposed लोड. और ये सबके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गामा एफ भी अप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, गामा एफ. राइट? अगर आपको याद रहेगा जब हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए बात कर रहे थे, राइट, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ये दिया था 1, दिस वाज गिवन एज 1.2 एंड दिस वाज 1. और यहां पर दिया था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, दिस वाज 1 एंड दिस वाज आल्सो 1. तो अगर ये दोनों में डिफरेंस देखते हैं यहां पर डेड लोड के लिए, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में इट वाज फाउंड दैट दिस इज ग्रेटर. सो दिस वैल्यू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है दोनों जगह पर, सो दिस प्लस दिस वाज कंसीडर्ड एज द अल्टीमेट, वाज कंसीडर्ड एज द डिजाइन मोमेंट, एंड फॉर दैट वी हैड वेरीफाइड इन द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी LML, क्या था वो, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, SLS, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. लेकिन अल्टीमेट लिमिट स्टेट के लिए व्हाट आर द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, वो हमने कौन सा टेबल रेफर किया था उसके लिए? इफ यू रिमेंबर, वी हैड रेफर्ड टेबल B3 on page number 95. Now here we have to refer table B2. This is on page number 93 of IRC 6 2017. It is B2, page 93, IRC 6. Partial safety factor for verification of structural strength. देखिए वो जो टेबल 3 था, B3, वो था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. तो जो हमने सॉल्व किया था फ्रॉम द सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जो भी हमने क्रैकिंग वगैरह को वेरीफाई किया, स्ट्रक्चर क्रैक नहीं होना चाहिए, सो दैट द स्ट्रेसेस मस्ट बी विद इन द परमिसिबल लिमिट.
वो that entire thing was the limited state of serviceability. अभी हम जो बात कर रहे हैं, it is the limited state of strength. So we need to refer table B2, partial safety factor for verification of structural strength. यहाँ पर भी बेसिक कॉम्बिनेशन दिया है, बेसिक कॉम्बिनेशन, एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन, सेस्मिक कॉम्बिनेशन. तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं डेट इज ओनली फॉर द बेसिक कॉम्बिनेशन. उसमें भी क्या दिया है, परमानेंट लोड्स, डेड लोड, स्नो लोड इफ प्रेजेंट, adding to the effect of the variable loads. Then variable loads are the carriage way live load. और ये जो एडिंग टू द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल लोड दिया है, उसमें दिया है, उसमें समझिए व्हाट इज दैट, वेरिएबल लोड इज द सरफेसिंग. 1 permanent load, 1.1 the dead load, 1.2 surfacing adding to the effect of variable loads. क्योंकि सरफेस का लोड कम ज्यादा हो सकता है, ओके, बिकॉज उसका वेरिंग वगैरह होते रहता है, वापस उसमें फिर री एडिंग होते रहता है. सो इफ यू सी हियर, for the permanent dead load it is given as 1.35. For varying load it is given as 1.75. For the carriageway live load it is given as 1.5. तो हम देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन में ज्यादा मोमेंट आ रहा है या ये कॉम्बिनेशन में. Where the bending moment is more, whether the strip is considered in the deck slab only or the strip is considered from the footpath. और यहाँ के लिए क्या दिया है, partial safety factors. This is the permanent nature of dead load, so this is 1.35 और ये तो 1.5 ही रहेगा यहाँ पर. तो ये तो सेम है दोनों कॉम्बिनेशन के लिए. Either you consider the strip, see this is the bridge. एक बार स्ट्रिप हमने यहाँ कंसीडर किया था इन द डेक स्लैब, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक बार कंसीडर किया था स्ट्रिप यहाँ फुटपाथ में से. तो कहां पर ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, we will consider corresponding to that as the critical. देखिए ये कितना रहेगा, 1.3 टाइम्स ऑफ. अब मेरे पास वो मूवमेंट के वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, आपके पास रहेगा, प्लीज जरा मुझे वो वैल्यूज देना. इट इज 1.75 टाइम्स ऑफ. ये आगे का हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं दोनों में से कौन ज्यादा रहेगा, देन वी विल ऐड दिस. और ये कितना रहेगा, 1.35 टाइम्स ऑफ, जहां पर हमने डेक स्लैब, बेरिंग कोट और रेलिंग सब कंसीडर किया था टुगेदर. हाउ मच वर द मूवमेंट्स, वो मोमेंट्स के वैल्यूज अवेलेबल होंगे. सेपरेट वैल्यूज ड्यू टू द deck slab, it was 113.91 I think, and it was 26.33. और ये कितना रहेगा, when it is passing from here, 225.28. अब ये दोनों में से जहां ज्यादा वैल्यू आता है, दैट स्ट्रिप इज क्रिटिकल, वहां ज्यादा मूवमेंट है. वेलकम हाजी, वेलकम. कौन से सेमेस्टर का है हाजी, हिंदी सेमेस्टर यू आर? So when we consider a strip of 1 meter wide from the deck slab, when we consider the strip of 1 meter width from the footpath, compare the two cases. One where the moment is maximum, that is critical. यहाँ पर ये टोटल मोमेंट कितना आ रहा है, ये बताइए मुझे. हाउ मच दिस टोटल मोमेंट इज? 1.3.2 दिस एंड 1.7.2 दिस, और ये 1.3.2 225, ये कितना आ रहा है? फिर दोनों में से जो ज्यादा मूवमेंट रहेगा, वी विल कंसीडर करस्पॉन्डिंग टू दैट. हाजी इज सेमेस्टर 8, ओके, इट इज 100.86. हाउ मच इट इज? अच्छा 199, it is 199.86. So this is equal to 199.86 plus अच्छा ये टोटल है 199.86. ओके थैंक यू. सो दिस टोटल इज 199.86.
and this total is equal to 304.13 304.13 kilonewton meter. तो अपने स्ट्रिप कहां से लेना चाहिए क्रिटिकल? हियर इट इज समथिंग 199.86, ये आ गया 304, इसका मतलब दिस स्ट्रिप इज क्रिटिकल. So I will consider the bending moment because of the dead load is this, plus by live load कितना हो जाएगा? 304.13 plus 1.5 times of the bending moment because of live load कितना था ये? 147.83. 147.83. This is the ultimate moment acting. चलिए कितना होता है मुझे बताइए. What is the ultimate moment acting? Okay, fine. Okay, thank you, Amir. What is the ultimate moment acting? Okay. Hadi, it is semester 8. So ultimate moment acting is equal to 304.13 plus 1.5 times of the moment because of live load. How much is it? 150, वो तो 225, 200 और 300, 500, 500 and something होना चाहिए. What is the ultimate moment acting? 525.9. चलिए ठीक है. It is 525.9 kilonewton meter and it is less than the moment of resistance 849.34 kilonewton meter. Is it safe or unsafe? It is safe. अगर अनसेफ आता तो फिर हमको सोचना पड़ता है कि ये क्या प्रॉब्लम से अनसेफ आ गया है और हमने इसको कैसे रिवाइज करना चाहिए. बट हियर वी गॉट इट सेफ. इज इट राइट? नेक्स्ट क्या रहेगा नाउ? द नेक्स्ट विल बी टू वेरीफाई इन अल्टीमेट लिमिट स्टेट शेयर. राइट? शेयर के लिए हमने क्या करना पड़ेगा हमको? व्हाट इज द सेम फार्मूला? अगर स्ट्रिप हमने कंसीडर किया तो 1.35 times of shear force due to the deck slab plus 1.75 times of the shear force due to the bearing cord plus 1.5 times of the shear force due to live load. फिर 1.35 times of the shear force due to the deck slab plus footpath plus railing plus 1.5 times of the shear force due to the live load. दोनों में से जो ज्यादा शेयर फोर्स रहेगा, फॉर दैट शेयर फोर्स दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द शेयर फोर्स कैरीड बाय द सेक्शन. इफ इट इज सेफ. इफ नॉट, अनसेफ. अनसेफ रहेगा तो फिर रीडिजाइन. चलिए, सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू. क्योंकि शेयर का पूरा एक अलग पार्ट रहेगा. नेक्स्ट क्लास में वी विल कंक्लूड दिस. शेयर करेंगे. उसके बाद क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री रेनफोर्समेंट. व्हाट इज दैट सप्लीमेंट्री रेनफोर्समेंट? मैंने जो बताया, बॉटम में एक नेट चाहिए. रेनफोर्समेंट पैरेलल टू द स्पैन, रेनफोर्समेंट पैरेलल टू द विड्थ और द कैरेज विड्थ. वो जो एक रेनफोर्समेंट का नेट चाहिए, वो नेट डिजाइन करेंगे और शेयर के लिए डिजाइन करेंगे. वी विल कंक्लूड दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास. उसके बाद मुझे याद दिलाना प्लीज, अगर मैं भूल जाता हूं तो. हमने आईआरसी क्लास ए के लिए सॉल्व किया है ट्रैक. अगर ये आईआरसी क्लास 70 ट्रैक व्हीकल रहेगा तो क्या होगा? अगर आईआरसी क्लास ए रहेगा तो क्या होगा? आईआरसी क्लास बी रहेगा तो क्या होगा? आफ्टर दिस सॉल्यूशन, यही प्रॉब्लम के लिए वी विल डिस्कस दोस थिंग कि अगर चेंज रहता है लोड में तो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में डिफरेंस कैसे आएगा. Okay, fine. Thank you.